स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को क्लिक करके क्विज कंप्लीट कर लीजिए। फिर इस क्विज के आंसर को देखने के लिए इस वीडियो को देखिए, जिससे आप अपने आप को जज कर पाएं कि आपको इस चैप्टर का कितना टॉपिक समझ में आया है। टेस्ट में क्वेश्चन और आंसर हमेशा सफल वे में दिखेगा। आप जितनी बार टेस्ट देंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन 1 था, यहाँ वो क्वेश्चन 1 ना होकर कोई और क्वेश्चन हो। इसी तरह से ऑप्शंस का भी ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड। फर्स्ट ऑप्शन रेस्पिरेशन, सेकंड ऑप्शन एक्सक्रीशन, थर्ड ऑप्शन मेकिंग फूड, फोर्थ ऑप्शन फोटोसिंथेसिस। आंसर विल बी फोटोसिंथेसिस। चेक कर लेते हैं आंसर को। Yes, correct option is a photosynthesis. Next question. The internal energy reserve in autotrophs is first option proteins, second option starch, third option glycogen, fourth option fatty acid. Answer will be starch. Answer को check करते हैं. Yes, correct option. Next question. Most of the plants absorb nitrogen in one of the following forms. This is first option proteins, second option urea, third option nitrates and nitrites, fourth option atmospheric nitrogen. Answer will be nitrates and nitrites. Answer check कर लेते हैं. Yes, correct answer. Next question. The opening and closing of the stomatal pores depends upon first option oxygen, second option temperature, third option concentration of CO2 in stomata, fourth option water in guard cell. आंसर विल बी वाटर इन गार्ड सेल। चेक करते हैं आंसर को। यस, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। सेकेंड ऑप्शन ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी। नेक्स्ट ऑप्शन एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट ऑप्शन ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम। आंसर विल बी movement of molecules does not take place among cells. चेक करते हैं आंसर को। Yes, correct answer. Next question. Which of the following is correct statement? इसमें correct statement को choose करना है। First option, heterotrophs synthesize their own food. Second option, heterotrophs utilize solar energy for photosynthesis. Third option, heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. Fourth option, heterotrophs do not synthesize their own food. Answer will be heterotrophs do not synthesize their own food. Check कर लेते हैं आंसर को। Yes, correct answer. Next question. Name the green pigment present in the leaves of a plant. First option chromoplast, second option stomata, third option chlorophyll, fourth option leucoplast. Answer will be chlorophyll. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. Which of the following events does not occur in photosynthesis? First option, conversion of light energy into chemical energy. Second option, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Third option, oxidation of carbon to carbon dioxide. Fourth option, absorption of light energy by chlorophyll. Answer will be oxidation of carbon to carbon dioxide. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. The process of obtaining food by amoeba is known as first option dialysis, second option cytokinesis, third option phagocytosis, fourth option amoebiasis. Answer will be phagocytosis. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. Which is the correct sequence of body parts in human alimentary canal? First option mouth, then stomach, then small intestine, then large intestine, then esophagus. Second option mouth, then stomach, then esophagus, then small intestine, then large intestine. Third option mouth, then esophagus, then stomach, then large intestine, then small intestine. Fourth option mouth, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine. Answer will be mouth, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine. Now check the answer. Yes, correct answer. इस ऑप्शन को चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे? पहले किसी भी दो को रिलेट कर लो जो एक जैसा है। जैसे माउथ देन स्टमक, इसमें भी है माउथ देन स्टमक।
तो इन दोनों को रिलेट करते हैं। अब देखते हैं कि माउथ के बाद स्टमक आता है क्या? नहीं आता है, यानी ये ए और बी दोनों ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम लोग सी और डी को करते हैं रिलेट। माउथ, माउथ के बाद ओसोफेगस है, इसमें भी माउथ, माउथ के बाद ओसोफेगस है। अब इसके बाद के टर्म को देखते हैं। ओसोफेगस के बाद स्टमक दिया हुआ है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन दिया है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है। इसमें ओसोफेगस के बाद स्टमक दिया हुआ है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है। तो स्टमक तक तो दोनों का सेम है। इसके बाद यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है, इसीलिए डी ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of alimentary canal digestion does not occur? First option small intestine, second option large intestine, third option liver, fourth option stomach. Answer will be large intestine. Now check the answer. Yes, correct answer. Next, dash is the longest part of the alimentary canal. First option stomach, second option liver, third option small intestine, fourth option large intestine. आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बड़ा वही होता है। चलिए चेक करते हैं आंसर को। यस, करेक्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, डैश इज द साइट ऑफ द स्टार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑप्शन स्टमक, सेकेंड ऑप्शन लीवर, थर्ड ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन। आंसर विल बी स्टमक। नाउ चेक द आंसर। Yes, correct answer. Next question. Which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? First, pepsin. Second, cellulose. Third, amylase. Fourth, trypsin. Answer will be amylase. Now check the answer. Yes, correct. Next, which of the following are the correct functions of two components of pancreatic juice, trypsin and lipase? First option, trypsin digests proteins and lipase carbohydrates. Second option, trypsin digests emulsified fats and lipase proteins. Third option, trypsin digests starch and lipase fats. Fourth option, trypsin digests proteins and lipase emulsified fats. Answer will be trypsin digests proteins and lipase emulsified fats. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. In respiration, air passes through. First option, pharynx to nasal cavity to larynx, larynx to trachea, trachea to bronchi, bronchi to bronchioles. Second option, larynx to nasal cavity to pharynx, pharynx to trachea. Third option, nasal cavity to pharynx, pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to bronchi, bronchi to bronchioles. Fourth option, larynx to pharynx, pharynx to trachea, trachea to lungs. Option is C. Now check the answer. Yes, nasal cavity to pharynx, pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to bronchi, bronchi to bronchioles. Now next question. The oxygen liberated during photosynthesis by green plants comes from. First option water, second option glucose, third option carbon dioxide, fourth option chlorophyll. Answer will be water. Yes, correct answer. Next question. Arteries and veins are connected by a network of extremely narrow tubes called. First option sieve tubes, second option vena cava, third option capillaries, fourth option valves. Answer will be capillaries. Now check the answer. Yes, correct. Next question. Blood consists of what fluid medium? First option platelets, second option lymph, third option plasma, fourth option all of these. Answer will be plasma. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. One cell thick vessels are called. First option arteries, second option veins, third option pulmonary arteries, fourth option capillaries. Answer will be capillaries. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. The blood vessel which carries oxygenated blood from the lungs to the heart is. First option main artery, second option pulmonary artery, third option main vein, fourth option pulmonary vein. Answer will be pulmonary vein. Now check the answer. Yes, correct answer. Next question. Which of the following is correct path taken by urine in our body? First option kidney to ureter, ureter to urethra, urethra to bladder. Second option kidney to bladder, bladder to urethra, urethra to ureter. Third option bladder to kidney, kidney to ureter, ureter to urethra.
Fourth option, kidney to ureter, ureter to bladder, bladder to urethra. Option will be D. Now check the answer. Correct option. Next question. The excretory units in the human excretory system is called. First option, nephron. Second option, neuron. Third option, nephridia. Fourth option, kidneyon. Correct option is nephron. Now check the answer. Yes, correct option. Next question. The procedure of cleaning the blood of a person by using a kidney machine is known as. First option, autolysis. Second option, hydrolysis. Third option, dialysis. Fourth option, photolysis. Answer will be dialysis. Now check the answer. Yes, correct answer. Now last question. The substance which is not reabsorbed into the blood capillaries surrounding the tubule of a nephron is mainly. First option, glucose. Second option, amino acid. Third option, urea. Fourth option, water. Answer will be urea. Now check the answer. Yes, correct answer. That's it.